क्या हो गया पूरा? क्रोमैटिन फाइबर्स, क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियोलस। कोई हाँ बोल रहा है, कोई ना बोल रहा है। ओके, आई थिंक वी आर डन ऑल द ऑर्गेनल्स। हाँ या ना? नहीं, ठीक है। I think I will talk to sir about a timing change in timings because I said I will not be coming on time. But it's a little late. I think I heard that some of you are coming before 4:10 also. मतलब नहीं चलाना थे। Actually मैं लेक्चर में 4 ना के मतलब ही नहीं। Unless it's holiday, be on like 4:15, 4:30 तक आ जाओ। 4:30 के पहले मैं एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट भी नहीं कर पाऊंगा। So I want to come slightly delayed. Honestly यहाँ पे आके बैठ के रहोगे। Then मैं officially I'll try to change the timing also, at least for my lectures. Okay. ये सब हो गया था ना? सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, यार नहीं। तो कहाँ से बोलूं? क्या था? Okay. Then we have completed cell membrane etc. I think the only part which I left out was osmosis को explain नहीं किया है. Okay. उसके बाद मैंने nucleus पूरा खत्म कर दिया था. So I'm going with the that volume part. We're done with the nucleus. Functions of nucleus and everything. हाँ या ना? Prokaryotic नहीं. Turn the page. के बाद साइटोप्लाज्म कर दिया है, सेल वॉल कर दिया है, वो पूरा पार्ट एक्सप्लेन कर दिया था। आई एम स्टार्टिंग टुडे विद सेल ऑर्गेनल्स। पहला सेल ऑर्गेनल्स पूरा पढ़ लेंगे, देन वी अगेन गो बैक टू न्यूक्लियस वेयर आई टॉक अबाउट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है आपको, बिकॉज़ एवरीथिंग देयर इज इन द वॉल्यूम इटसेल्फ, सो नो नीड टू राइट एनीथिंग, नीड टू ड्रॉ एनीथिंग। द फर्स्ट वन इज गोइंग टू टॉक अबाउट सेल ऑर्गेनल इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। How many types of ER are present in the cell? Two. What are two? Smooth and rough. Why they are known as smooth? Why they are known as rough? Okay, और कुछ? Then, if I take a ER, एक मोमेंट के लिए मानना ER आइसक्रीम है, okay? वैनिला प्लेन आइसक्रीम, okay? अब उसी वैनिला प्लेन आइसक्रीम के ऊपर टूटी फ्रूटी डालना, so what will appear? Smooth or rough? Then when the ER is without any ribosomes, we say it as smooth endoplasmic reticulum. When the ER are attached with ribosomes, we say it as rough endoplasmic reticulum. Am I clear? Now, what is the function of ER? Membrane biogenesis, transportation, framework, detoxification. आपके बुक में सब कुछ लिखा हुआ है. If you see your book, they're given it properly over there. लिखा है
Okay, so everything is in the volume. So अब वॉल्यूम पे ज्यादा ध्यान करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ध्यान देना. Now children, first of all, what is cell membrane made up of? Somebody said lipoprotein. What is lipoproteins? Lipids and proteins. Now, endoplasmic reticulum main function is membrane biogenesis. Membrane, that is cell membrane. Biogenesis, biological formation of cell membrane. Now, why biological formation of cell membrane? Then, ER दो टाइप के थे, RER और SER. SER का अगर फंक्शन इंडिविजुअली पूछा गया, तो SER produces lipids, RER produces proteins. तो दोनों मिला के क्या बनाते हैं? Lipid and proteins, which are nothing but lipoproteins, which are nothing but cell membrane. So कहीं ना कहीं ER helps in formation of cell membrane. Am I clear? Second, transportation. It has to transport the material within the cell or outside the cell. Here you can see the nucleus cell. अगर मान लो आपका TB is a cell, okay? So nucleus से जो material आ रहा है, ये cell के अंदर ही है. So it transports substances within the cell. But अगर यही यार मैं join करता हूँ cell membrane तक, what is happening? The material moves right up to the cell membrane and then transported out of the cell. So it transports, it serves as channels for transportation of material, especially what we talked about, proteins and lipid, between various regions of the cytoplasm, or between the cytoplasm and the nucleus, or between the nucleus and outside the cell. That is what transportation function is all about. Third function. What is third function? Framework. Now, what happens if I remove the pillars of this class? Ceiling will come down, collapse हो जाएगा. Same way children, अगर आप ER का डायग्राम देखते हो, तो ER is ये सेल है, न्यूक्लियस है, ज्यादा ER which I have drawn, rough diagram है, that is drawn rough. Now, if I remove this ER and this ER, what will happen? This cell membrane will collapse onto the nucleus part, and this cell membrane will collapse onto this nucleus part. So it provides a supportive framework to the cell. That's what the third function is. Apart from that, not only it is preventing the collapse, but if an organelle is present over here, can the organelle move this side? Because यहाँ पे there is a blockage. Same way, if you try to move this side, there is a blockage. So it restricts the positions of the cell organelles within the cell. That is what we say it as framework. Last function is the detoxification. Actually, ये थोड़ा unique है because this is not the function of ER. It is a function of SER. सिर्फ SCR ये function करता है invertebrates to detoxify all the chemicals present in the body. Specifically, SCR कहाँ पे ज्यादा होता है? In the liver cells, which is the first organ which get damaged when you are under the influence of alcohol. Alcohol पीने से सबसे पहला कौन सा डैमेज होता है? Liver. अगर 10 दिन पियोगे तो liver खराब होगा. Okay? So liver acts as a detoxifying unit because इसके अंदर maximum SCR is present. Am I clear? अब चलन आपको एग्जाम में इसको याद करना है. तो चार फंक्शंस, membrane balances, transportation, framework and yeah. Now you can remember it anyway, like membrane balances, transportation, framework. Okay. How you remember, it's your choice. Okay. Like empty. You can remember it as DF, duffer, okay, or mental, duffer or mental. So D and F, D for detoxification, F for framework. Okay, mental का
टेल, M और T का टेल का T. So M for membrane myosynthesis or T for transportation. Is it clear? Now this ER is further made up of two types. This is SCR, this is RER. तो इसका डिफरेंशिएट दिया जाता है जो बुक में दिया गया वापस. What is RER? जहाँ पे राइबोसोम अटैच है. What is SCR? Ribosomes are not attached. What is the function of ribosomes? Protein synthesis. What is the function of SCR? Lipid synthesis. Where is RER found? Seen in plasma cells. Blood cells के अंदर plasma होता है, उसके अंदर दिखाई देता है. But the smooth is seen in the fat cells, liver cells. Fat cells are nothing but skin के नीचे. इसे अपन चर्बी कहते हैं. Okay, so that's all in the fat cells. कोई doubt है? Shall I go ahead? Next. Ribosome, a very small organelle but very important organelle. Irrespective कहाँ पे भी पढ़ोगे एक ही फंक्शन है. चाहे बैक्टीरिया पढ़ो, चाहे बैक्टीरिया प्लांट पढ़ो, चाहे एनिमल पढ़ो, चाहे फंगाई पढ़ो, चाहे कुछ भी पढ़ो, एक ही फंक्शन. व्हाट इज द फंक्शन? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम्स दो टाइप में अवेलेबल होते हैं सेल के अंदर. वन बाउंड, वन फ्री. एक तो किसी के साथ अटैच है या किसी के साथ मतलब पूरा फ्री है. So now what is that attached? Attached, either it is attached to the endoplasmic reticulum or it is present within the mitochondria. If it is free, it is scattered in the cytoplasm. चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया में अटैच हो, चाहे वो ER में अटैच हो, चाहे वो फ्री हो, फंक्शन एक ही है, प्रोटीन सिंथेसिस. Without, shall I go ahead? Next, the most important organ of the cell, mitochondria. What is mitochondria? Commonly referred as powerhouse of a cell. Q produces energy in the form of ATP का full form ट्राइफॉस्फेट. सुना है? हाँ या ना से बताना है. नहीं. ओके. चल अगर नहीं सुना तो सीधा ना बोलना, वरना मैं आज मुझे पता है तो मैं आगे बढ़ूंगा. So better to say no other than saying yes. Now you go into a mall. आपने मान लो ड्रेस खरीदा. What you give in turn of dress? Money. Okay. So money is what you pay. अब इंडिया में हो, so in what form the money is paid? रुपीस. अगर यूएस में होते तो, यूरोप में होते तो चिल्ड्रन कैन आई से ऑल दिस आर करेंसीज पर अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल है. अल्टीमेटली वही खर्च करना है, हम करेंसी खर्च कर रहे हैं बट अलग अलग फॉर्म. सेम वे व्हेन आई डू एक्सरसाइज और यू डू एक्सरसाइज और एनी वर्क, फॉर एनी मूवमेंट और एनी वर्क, व्हाट डू आई रिक्वायर? एनर्जी. सो एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी में जो भी हम काम करते हैं, for that there is an energy molecule required. This energy molecule is of different forms, but the most common form is ATP, adenosine triphosphate. Now I said different forms. अब रुपीस का एग्जांपल लेते हैं. I give her 500 रुपीज नोट और मैं आपको 500 रुपए का एक नोट देता हूं. एंड आई गिव हिम 50 रुपीज के 10 नोट्स. आर द डिनोमिनेशन सेम? यू नो सेम है क्या अलग अलग है? सिर्फ अलग क्या था? द डिनोमिनेशन ऑफ द रुपीज 50 का है, 100 का है और 500 का है. सेम है. एनर्जी अल्टीमेटली यूज हो गया है एटीपी पे, बट इनिशियली इट कैन बी NADPH, CTP, GTP, FADH2, अलग अलग फॉर्म में होगा, बस सब कन्वर्ट होता है अल्टीमेटली ATP. एट डेट अपनी बॉडी ये यूज करती है टू प्रोड्यूस द एक्चुअल एनर्जी. सो वेयर इज दिस एनर्जी प्रोड्यूस्ड? इन द माइटोकॉन्ड्रिया, एंड दैट इज व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज powerhouse of a cell.
अब मान लो अपन इसके घर पे घूमने गए, पार्टी, टेकिंग अप टू होम, पहली बार गए तो घर दिखा रहे सर, ये फ्रेंड्स को भी घर दिखा रहे हैं, शी एंटर इन अ रूम, तो ये मेरा किचन है, वो किचन क्यों है? गुड, मैं बेडरूम में भी खाना पका रहा हूँ तो, और व्हाट इज वन थिंग विच सेज कि किचन है? अगर गैस किचन में तो किचन में ले उसको, कि डू वी कीप गैस इन अवर बेडरूम या बेड किचन में? अगर बेड किचन में तो सब बेडरूम में, that thing is there, that is why we say it is kitchen or maybe a bedroom or a toilet for that matter, I hope. Okay, just same thing, the organelles पूरे सेल में बहुत सारे हैं, पर सिर्फ इसी ऑर्गेनल में एनर्जी बनती है, and that is why this organelle is known as पावर हाउस ऑफ अ सेल. अगर एनर्जी कहीं और बनती है तो मैं उसको भी पावर हाउस ऑफ सेल बोलता, पर वो सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में. Am I clear? अब वो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में क्यों बन रहा है, उसका आंसर भी आपने को ढूंढना है. तो यह प्रोटीन सिंथेसिस. Okay, what does mitochondria have? Mitochondria are able to make proteins because they have their own DNA and ribosomes. DNA किसमें होता है सेल के अंदर? किसमें? क्रोमोसोम किसमें होता है? न्यूक्लियस. So only one organelle has its DNA, that is nucleus. पर न्यूक्लियस के अलावा there are two more organelles जिनके पास खुद का डीएनए होता है. न्यूक्लियस में तो बाय डिफॉल्ट होता है, वही उसी के लिए बनाया हुआ है, पर दो ऑर्गेनल और है जिनमें खुद का डीएनए होता है. एक माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा क्लोरोप्लास्ट, जो अपन बाद में पढ़े. सर टू ऑर्गेनल जिनका खुद का डीएनए है और खुद के राइबोसोम्स. राइबोसोम्स वर्ड आ गया तो क्या बनना चाहिए? प्रोटीन सिंथेसिस. तो फंक्शन क्या लिखा हुआ? प्रोटीन सिंथेसिस. नाउ हैव यू हर्ड अबाउट we produce energy in the mitochondria by which process? अरे cellular respiration. तो हमारे बॉडी में प्रोसेस होता है known as respiration. Whatever food we eat is ultimately broken down into glucose is ultimately broken down to give me energy. So children, this energy की reaction जो होता है, it is 30-step reaction. Each reaction is catalyzed by an enzyme. और हर एक एंजाइम प्रोटीन होता है. Enzymes, all enzymes are protein, but all proteins are not enzymes. All girls are student, but all students are not girl. I hope समझ में आया. Okay, सारे लड़कियां स्टूडेंट है, पर सारे स्टूडेंट लड़कियां नहीं हो सकती, बिकॉज ये भी नमूने हैं. ये वैसे ही है. चलो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, पर हर प्रोटीन एंजाइम नहीं. सो बिकॉज इट इज एबल टू प्रोड्यूस सर्टेन एंजाइम्स, प्रोटीन सिंथेसिस, इसके वजह से द रिएक्शंस कैन ऑकर इन द माइटोकॉन्ड्रिया. बिकॉज रिएक्शन ऑकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड. बिकॉज एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, पावर हाउस ऑफ अ सेल. समझ में आया? So what is one uniqueness about the mitochondria? It has its own and दूसरा uniqueness. Mitochondria is the second organelle which is having double membrane. एक न्यूक्लियस है बाय डिफॉल्ट, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया है और तीसरा वापस क्लोरोप्लास्ट. These are the only organelles which are double membrane. Mitochondria double membrane. Outer membrane is smooth. But inner membrane is showing foldings. These foldings are referred as cristae. इसके वजह से it increases surface area और एनर्जी बढ़. समझ में आया? आपको डिटेलिंग नहीं है,
जस्ट हैव टू नो द टू फंक्शंस। ओके, आपको ये नहीं है नीचे वाला पार्ट जस्ट डाला हुआ है। देन बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए, इट हैज इट्स ओन राइबोसोम्स, इट इज नोन एज सेमी ऑटोनॉमस सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट। कैन एनीबॉडी से मी व्हाट इज रेप्लिकेटिंग? Copying, doubling, duplication, cloning, whatever you say. Children, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड हो सकता है, बिकॉज डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए हमें? डीएनए चाहिए। उसके पास डीएनए, इसके लिए इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सेमी ऑटोनॉमस, व्हाट इज ऑटोनॉमस? own function, properly work on its own, automatic is autonomous. Semi autonomous because ये भले खुद कर सकता है बिकॉज खुद का डीएनए, और सेल के अंदर इंपॉर्टेंट होता है न्यूक्लियस जो कंट्रोल करता है, इसके पास भी डीएनए तो भी खुद को कंट्रोल करेगा। बट दिस डीएनए इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियर डीएनए, तो पूरी तरह से आजाद नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में ये तुम हो, तुम करने के लिए कुछ बहुत कुछ कर सकते हो बट लिमिटेड अमाउंट। अब तुम किसके कंट्रोल में हो? पेरेंट्स के कंट्रोल में, आया ना? जब बड़े हो जाओगे तो शायद पेरेंट्स को बाय करोगे, पर अभी यू आर सेमी ऑटोनॉमस, आगे जाके ऑटोनॉमस बने, पर तब शायद बड़े होके माँ बाप बन गए हो, तो ऑटोनॉमस को तो पता नहीं, बट तुम जैसे कि नमूना तुम्हें भी होगा, और तुमसे भी वर्स्ट होगा। लीव इट, हम देखेंगे। एनी प्रॉब्लम इस पार्ट? चला, गो अहेड। द नेक्स्ट ऑर्गेनेल, गोल्गी बॉडीज। फंक्शंस एक बार देख लेना, ट्रांसपोर्टेशन, सेक्रेशन, स्टोरेज, सिंथेसिस and formation of lysosomes. I want to see the book part. मिला? फंक्शंस देखना, सेम लिखा है। अब फंक्शन के ऊपर देखना, स्ट्रक्चर। This organelle was first described by the scientist Camillo Golgi. So I hope you understand वो नाम क्यों आया। Why? In honor of the scientist, the name was given as Golgi apparatus, Golgi complex, Golgi bodies. आपको जो लिख रहा है आप लिख सकते हैं। Now, what is this Golgi body made up of? चल, Golgi body देखा जाए तो it is formed from the endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum ऐसे प्रेस करोगे और टुकड़ों में तोड़ोगे तो कहीं ना कहीं that small things which break up, they go and join the bigger parts of the ear only to form the Golgi bodies. तो Golgi bodies डायग्राम में दो पार्ट होते हैं, एक होता है सिसफेस, एक होता है ट्रांसफेस। मतलब एक होता है द फॉर्मिंग फेज, एक होता है ब्रेकडाउन फेज या मैच्योरेशन फेज। यहाँ से ईआर से टूटते हुए यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, ये बड़ा होते जा रहा है, यहाँ से वापिस वो सेपरेट होके ये बाहर निकलते जाता है। सो यहाँ से बोगी ऐड हुआ, यहाँ से बोगी बाहर निकला, ऐड बार चलते रहता है। ओके, सो दैट इज व्हाट गोल्गी बॉडी इज। किससे बनता है गोल्गी बॉडी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो व्हाट वाज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर प्रिपेयरिंग? अभी अपन ने पढ़ा, व्हाट वाज इट फॉर्मिंग? लाइपोप्रोटीन। वो तो कंबाइंड में, सिंगल ही क्या बना रहा है? प्रोटीन और लिपिड्स। तो चलन जो ईआर बना रहा है वही आगे डिस्पैच होगा इन द गोल्गी बॉडीज। तो वहां पे चलन वही लिखा है, the material synthesized near the ER is packaged and dispatched to various target inside and outside of cell through Golgi apparatus. समझ में? तो जो भी ER बना रहा है उसको थोड़ा प्रॉपरली पैक करके ढंग से भेजना आगे। ये Golgi body है। What is secrete? Same. Vesicles carries hormones, enzyme to different places. So transport जो कर रहा है वही secrete कर रहा है।
It is secreting enzymes and hormones to various areas because all enzymes are proteins and majority of the hormones are proteins and majority of them are lipids. तो कहीं ना कहीं उसी से बन रहे hormones और enzymes. Third, storage. What does it store? ER ने जो बनाया स्टोर कर रहा है protein and lipids. Next, synthesis of starch. Golgi apparatus synthesizes starch. That is complex sugar from simple sugar. ये भी उसका एक function है. Produce starch. And last, formation of lysosomes. आपकी बुक में लिखा हुआ है, उसके नीचे ये लिखा हुआ है. अब ध्यान देना, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम ये पहले दो लाइन. It also helps in modification and packaging of products of Golgi vesicle. चिल्ड्रन ये अलग पॉइंट है, तो यहाँ पे एरो या पॉइंट वाइज कुछ लिख देना, या वो समझ में आया कि वो अलग पॉइंट है, तो यहाँ पे कुछ वर्ड हाईलाइट नहीं किया हुआ है ना. आपको ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और ये पॉइंट है. इसके अलावा ये भी है. सो यू कैन हाईलाइट द वर्ड मॉडिफिकेशन एंड पैकेज. समझ में आया? ओके. नाउ व्हाट इज इन माय हैंड? मोबाइल. ओके, अपने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था. ये मोबाइल वीवो कंपनी का है. ओके, और ये कंपनी ये है क्लासरूम. दिस कंपनी प्रिपेयर्स दिस मोबाइल. The owner of the company is the madam. Okay, CEO, director of the company. So can I say she controls the entire company? Good. She is an influence. Okay. Then ये दो. Okay. उसका कंपनी के डिजाइनर्स, डिजाइनर्स एंड एवरीथिंग ये करते हैं. मोबाइल क्या बनेगा, कैसा बनेगा, क्या दिखेगा, क्या फीचर होगा, उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, ये डिसाइड कौन कर रहा है? ये सब. तो यू कैन से अ पार्ट ऑफ द ईयर. अब पीछे वाले को उन्होंने जो किया वो पास हो, राइबोसोम्स के पास. तुम क्या करोगे? डिजाइन किया ना, अब क्या बनाओगे? जो उन्होंने दिया तुम क्या बनाओगे? जब पार्ट बनेगा ना पहला, जब पीछे स्क्रीन ऊपर चलता है क्या, सिर्फ पेपर पर आकर सब कुछ, या कंप्यूटर पे क्या ऐसा लिखेगा, ऐसा लिखेगा, ये चलेगा, वो चलेगा, ऐसा वर्बली मोबाइल खरीदते हो क्या? किसी का कॉपी खरीदते हो? सर बनने के लिए पार्ट्स तो चाहिए ना, तो पार्ट्स को बना रहा है, ये बन गया पार्ट्स. अंदर से इन्होंने कर दिया. उसके बाद there is an assembly line. सब कुछ जोड़ना है. तो वो क्या है मैं बातें बताऊं, पर उसने असेंबल कर दिया. उसके बाद क्या या कुछ और से जोड़ते बोल रहा है सेलिंग, पैकेजिंग. पैकेजिंग चलो, अपना ये असेंबली लाइन तो दोनों का, पैकेजिंग यूनिट ये दोनों का है. अब सोचना चलो, असेंबली और पैकेजिंग के बीच में क्या होगा? क्या क्या टेस्ट करते हैं? फीचर्स टेस्ट करते हैं, चलता है कि नहीं चलता पहला वो चेक करो. टेस्टिंग किया, दो पॉसिबिलिटी है. तो चल रहा है, नहीं चल रहा है. चला तो क्या, नहीं चला तो दो पॉसिबिलिटी. discard, recycle, reversal, go and take you off. Then, what is your see now, Baba? Maybe human error,
प्रॉपरली अटैच नहीं किया गया, कोई स्क्रू प्रॉपर लगा नहीं, सर्किट प्रॉपरली अटैच नहीं हुआ, उसकी वजह से चल नहीं रहा होगा। वापस एक बार टेस्ट किया जाएगा, मिस आउट तो नहीं किया ना कुछ, अगर थोड़ा एरर है कर दिया, डन, चालू हो गया तो का फिर पैकेज, और अगर नहीं तो कोई डिस्कार्ड या बैक टू द मैन्युफैक्चरिंग, देन असेंबली और जो टेस्टिंग और मॉडिफाइंग का जोड़ा चाहे रिपेयर करने का और फिर पैकेजिंग करेगा, ये सब मिलजुल के करता है गोल्गी बॉडी। जो भी प्रोटीन्स और लिपिड्स जो ईआर से बनते हुए गोल्गी बॉडी में आते हैं, then they are not the functional ones. इनको फंक्शन करने के लिए थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। ये मॉडिफिकेशन कौन कर रहा है? वहां पर लिखा ना, इट आल्सो हेल्प्स इन मॉडिफिकेशन। जब वो मॉडिफाई किया जाएगा तभी वो फंक्शनल होगा, और जब वो फंक्शनल होगा तभी वो पैक होगा। इन्होंने पैक कर लिया, उसके बाद क्या? डिस्पैच। So that is what it does, transport in the form of either secretory vesicles, dispatch कर रहा है secretory vesicles की फॉर्म, बट उसमें भी कंडीशन अप्लाई। अगर secretory vesicle जा रहा है, सिर्फ मोबाइल जा रहा है तो secretory vesicles, तो उन मोबाइल में सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन है, नॉर्मल फोन सिर्फ स्मार्टफोन, तो मैं उसको बोलूंगा भाई वो पैकेज ना सिर्फ स्मार्टफोन हायर एंड यूजर का, तो वैसे ही है। अगर वो पैकेजिंग में सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्टिव एंजाइम जा रहा है, they could be hormones, they could be other components, they could be enzymes which are not digestive enzymes, but अगर सिर्फ डाइजेस्टिव एंजाइम पैक हुए तो उस वेसिकल को अलग से नाम दिया गया, and that is known as lysosome, the next organ. So what does it say? क्या ईआर से बना गोल्गी बॉडी और गोल्गी बॉडी से बना लाइसोसोम, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। समझ में आया सबको? दैट इज ऑल द फंक्शंस ऑफ इट। ओके, then I think I know we are going slowly because I have missed a lot of time. But don't worry, अपना सिलेबस बहुत कम है, तो अपना वैकेशन में ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा होता है, और जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हारा आफ्टर फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट ही हुआ होगा या नहीं हुआ, चलिए है ना, खत्म नहीं हुआ ना, तो अपना स्कूल कब तक है?